You are all welcome to Saspandan TCM Academy. Good morning to all. So we are discussing the Loshu Grid and Chaldean Numerology in Acupuncture. So we have discussed 3 sessions. This is the 4th session. We discuss how numerology works, what is the history of numerology, how you can benefit from the numerology, etc., etc. And we also discussed yesterday, so how you can make the Loshu grid for you and for others from date of birth. So I think you are practicing it a lot and you are able to make the Loshu grid of yours and others also. So I request everybody to keep on your video. आप अपने वीडियो ऑन कर कीजिए. Keep on your videos. I request everybody. Please keep on your videos. Good morning, Umaji. So this session will be totally interactive. So I request everybody to keep on your videos. Sumati ji, please keep on your video. Muhammad ji, please keep on your video. This session should be interactive. Good morning, Sumati ji. Mohammed ji, keep on your video. Okay, so today we are going to discuss the strength of arrows. So what are the arrows? Yesterday we discussed arrows on the Loshu grid. Okay, these are the arrows. This is the 816. Let us this is 3 horizontal arrows and 3 vertical arrows and 2 diagonal arrows. Okay, horizontal arrows are 492, 357, 816, and vertical arrows are the 438, 951 and 276, and the diagonal arrows are the 258 and 456. These are the 8 arrows in the Loshu grid. So today we are discussing
their strength. What are the strength? उनकी ताकत क्या है? What are the power of these arrows? One minute. Yes, yes. I started recording. So let us discuss. Move ahead. So, friends, we are going to discuss the 8 arrows of strength. 8 arrows of strength. So, arrows of strength, their connection to the Loshu Grid and planes. So, essentially, these are yogas, including some royal yogas, some yogas and royal yogas. So, which I will discuss in this session. So basically, this is about the arrows of strength. If you find 8 arrows, 3 horizontal, 3 vertical, and 2 diagonal. Okay, so basically about this thing, arrow of strength, and if you find the 8 arrows of strength in your Loshu Grid, say what do they signify? So that arrows what signify. So I will explore that in this discussion. So many people call it that is yoga, not a physical yoga. It is the yoga, that opportunities, yoga. So many people call it yoga, some call it arrows of strength, and others call it planes. It has been described by many names. So inside this Loshu grid, you should understand that the arrows of strength refer to numbers that form the arrow, and these are present in your Loshu grid. Okay, you can imagine you take your pen and your paper, notebook. Always keep near a pen and notebook with you, and you write your date of birth and others also, your kids, your wife, your brother, your uncle, your fathers, your mothers. Okay, you can check with their date of birth. Okay, so inside the Loshu grid, you should understand that arrows of strength refer to numbers that form the arrows, and these are present in your Loshu grid. So, what is the general terms or heading used for those arrows? So that's what I am going to tell you here. So all of you have already learned how the Loshu grid is formed. Okay, Loshu grid कैसे फॉर्म हो गया ये आपने समझ लिया है ये 3 सेशन में. उसका हिस्ट्री मालूम पड़ेगा. यू नो दिस हिस्ट्री. सो इन चाइना वन जो यू दैट एम्पायर he was some working near the river, that yellow river, to find a solution of flood. Okay, so he saw the turtle, and on the back of the turtle, he saw some numbers, that magical numbers, that number patterns, and he found that numbers. He count that number horizontally, vertically, diagonally. That sum total sum was the 15. Okay, of that numbers. Okay, so yesterday we discussed
And from that time, this Loshu Grid is formed in China, and that time in Chinese people believe in the Loshu Grid and numerology, and they worship to turtle. So I created this column very easily. This column, what you are looking on the screen, okay? It is very easily. I made the arrows and fill in the numbers, okay? I fill all numbers 1 to 9 in this grid, okay? And number like sequentially, that in the upper horizontal row, upper vertical row, first vertical row is a 4, 3, 8, then 951, then 276. You can see. To explain it again, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 numbers are here. Now, what will I do? Okay, we will see which vertical arrow, okay, vertical arrows, vertical planes, okay, grid arrow, okay, and column belong to these people, okay, which we can see the date of birth and the numbers we are filling in this grid. Now you can carefully observe that the column inside this square is follows. Okay, that is the 438. Okay, vertically see 438, 951, and 276. And horizontally 492, then 357, then 816. And diagonally 456 and 258. Okay, this is our grade. So you can see that the 438. Okay, now listen carefully. 438 are appearing in the one column. If you observe someone date of birth, and in that date of birth 438 is there, 4 number, 3 number, and 8 number is there, and vertically it is matching one column. Okay, then 951 are appearing in one column, then 276 are appearing with the single column. So what do? We call our first column the one with the 438. It is the thought column, 438. So uh, this person is the very thoughtful, so which have the 438 in the date of birth. It is a very thoughtful person. Okay, the plane of thought, the vertical column of thinking is you can write down every point. If some work he want to do, he will think repeatedly before doing. It is the thought column, thinking column. Okay. We see the second one in the same way, 951 form it. Okay, someone date of birth. Okay, you found 951 in their date of birth, and 951 this column is formed, and we call 951
is the will plane. Will plane, the plane of willpower. Okay, he have the lot of willpower. If someone have the 951 in his date of birth, so he have the lot of willpower. These people have very strong willpower, which have the 951 number in their date of birth. And you will see its characteristic as we move forward. So individually, we will examine all of these and let's see what it means if the people with the 438 form a square. 438. What is the 438? 438 is the, which is the plane of the 438? It is the thought plane. Okay? And 951, it have the willpower. Okay? Now you imagine your date of birth, your husband date of birth, your child date of birth, and match this with their date of birth, their personality. Okay, 438, it is a thought plane, and 951, it is the willpower plane. When it becomes 951, what does that mean? Then come 276. What does 276 represent for us? अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 276 आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? What does it represent? 276. It is the action plane. This column, this plane, which have the 276 in their date of birth. So that person is take action immediately. This is the action plane. That person are taking the action immediately. Find the numbers in there, your relative, your friend's date of birth, and we should find that 276 number. So, and match this characteristic with them. They are taking action immediately. So, always ready to run. They always ready to run. They always working, always active. That people which have the number 276 in their date of birth, they are always ready to run and always active. They are an action-oriented work plan. It is meaning action. In the vertical row, that we can say it represent the sum of action or the sum of will plane or sum of the thought plane. Okay, 438 is the thought plane. Then 951 is the willpower, and 276 is the action plane. They are always ready to run. They are always active. So this way we have seen the vertical column. Now
move forward. What do you see next? Now let us read again. First, create your Loshu grid. Now create your Loshu grid. Draw the Loshu grid on your notebook like this. Create your Loshu grid again. And for your information, this is what we did. Okay, these are the vertical column we discussed. Now let us read the horizontal rows. Horizontal 492, 357, and 816. These are the horizontal plane, horizontal rows. We need to complete 8 of them. So you have already read 3 vertical and 3. There are 3 more. What it is? This is the arrows of rows. It is the arrows of horizontal. Okay. So meaning which sums are formed this way. Okay. 492, 357, and 816. Now you can see which row is this. These are my 3 rows. Okay. So what number do they form? Okay, first see the 492, then 357 and 816. In the same way, I tell you that the 492 is my first row, which correspond to the mental plane. Write down 492 is the mental plane. Now, having 492 does not mean that it's purely mental. Okay, it is not a psychic. Okay, it is not a mental. Okay, don't think as a mental in English. So don't add the English word as the mental to it. It means that there is a very strong ability to think in those things. Every time they think strongly. It is a very strong ability to think. It is the mental plane. 492 is the mental plane. Those who have this number 492 have the very strong ability to think. Therefore, it is called 492. We look at the other one in the same way. What is it? Now 358. So we refer to 357. 357. We refer to 357 as the emotional plane. It is the भावुक. हिंदी में भावुक बोलते हैं, भावुक, भावना. It means emotion. This is the emotional. Those who have the 357 numbers, 357 numbers present in their Loshu Grid, in their date of birth, they are very emotional persons. People who have these numbers, 357, forming a row of full row, an arrow of row in their Loshu Grid are related to the emotion plane. In everything
they are emotional. What does the third plane represent? Now, third plane, we are coming to the horizontally third plane. So, what is the third plane? It mentions the numbers 816, last, okay, last horizontal line. 816. This called the practical plane. In हिंदी में व्यवहारिक प्लेन बोलते हैं इसको, practical plane. So people who have this number are very practical and pragmatic, practical. So their perspective is to view everything in the practical manners. They don't believe in the luck. They are very logical and they are very practical. Okay. Now you can relate anybody's date of birth, which they have this number 816 in their date of birth, and you can find they are very practical. First three sums and then again three sums. This is part of the sum. After that, what is important in the diagonal plane? Now let us discuss the diagonal plane. We discussed the vertical plane 438, 951, 276. Then we discussed the horizontal plane 492, 357, and 816. अभी कौन बोलेगा? Now, Sumati ji, unmute yourself. This session should be interactive. Unmute yourself and tell all column. First vertical, what is the meaning of the 438? What is the, unmute yourself. You take a note ना, लिख के लिया ना आपने, तो बोलो ना. हाँ, ओके, आप अनम्यूट नहीं हो सकते ना. ओके, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. हाँ, now unmute yourself. हाँ, what is meaning of the 438? 438. Very thoughtful person. हाँ. Then what is the meaning of the 951? Willpower. Willpower is very strong for them. Do you have, do you seen the any date of birth which they have the 951? So I have two numbers, but not three completely. Yeah, I yeah. have seen like So, that. हाँ, yeah. लेकिन एक फ्रेंड का आया बीच में पूरा ब्लैंक. मिडिल लाइन इज नो. आई थिंक नाउ आई गॉट टू नो दैट नो इमोशन. Okay, no message. Maybe. Okay. हाँ. Then 276. What did it mean? 276. हाँ, 2 से लास्ट 6. एक्शन प्लेन में है. They take actions immediately. Do you relate? Always working, ready to run, always active. They are action-oriented people, always ready to run. ऐसा Do you relate this number with anybody's? हाँ, yes sir. क्योंकि the friend who has the उसका नीचे का पूरा numbers है. And she is very active. बिंदास फटाफट निकल भी जाते हैं. Okay. Yeah. Okay, thank you. Now, Umaji, unmute yourself. हाँ, Umaji, unmute yourself. Good morning, sir. अभी सारे horizontal plane बताइए.
अभी The phone पहला पहला हॉरिजॉन्टल नंबर है 492. 492. 492 is mental plane. हाँ, mental plane. Do you relate someone? Strong ability to think. No, not fully. So, yes, my younger son, he Yeah. has 492. Okay, okay. Now, what is the second number? Three, Second is 357. emotional plane. Emotional. Do you relate this 357, which date of birth, including 357? Do you No, have no, any date of birth not, in your not just relative? not just as yet. I have to work on more of Loshu Grid. Ha. So, and what is the third? Eight eight one That six. is, that is the practical plane, who is very Yeah. logical, very logical. So I'm having two numbers in all the Loshu grids. Acha. Okay. And 951 I have in mine and my husband both. Yeah. 951. Okay. Okay. Now let us move forward. Let us take now. Let us discuss the diagonal plane. Now diagonal plane. So what is the diagonal plane? Diagonal 456. plane. Okay. So it is referred to as the arrow with the diagonal. Okay. It is also known as the Raj Yoga. Raj Yoga. That is the king's combination. Raj Yoga. Constructing a diagonal plane in the Loshu grid, numbers are placed inside the Loshu grid. Example, first draw the Loshu grid in your notebook like this. Okay, draw the Loshu grid in your notebook and fill up all the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 with their sequence. Okay, quickly, don't take time. Okay, हो गया? हो गया? Okay. Now, we are discussing the diagonal plane. The term diagonal refer to the way numbers are added in this manner. First diagonal plane is the 258. 258. This is called the property plane or property plane. So, and other name of this plane, it also the refer as the thought plane. And it also referred as the silver yoga. Silver yoga. 258 is the silver yoga. It also refer for the silver yoga. One minute. Huh? Please hold.
Okay, 258. This is the silver yoga. So now so this is the Raj Yoga. Raj Yoga. First Raj Yoga. First Raj Yoga, it is the 258. This is called the Pratipatti Purna. That is the complete achievement. 258. Those who have the 258 number, they once take the any verse in the hand, they always will stop when it's complete. वो काम पूरा किए बिना वो रुकेंगे ही नहीं. Okay, that is a complete achievement. Then second Rajyo, it is the 456 diagonal. This called the Lakshmi Purna or the Bhagya Purna. It is the complete fortune, complete luck. This is the very rarely, Raju, you will find this number 456 in anybody's date of birth. Okay, you find you check many date of birth, and you if you find this 456 number in their grid, he is a very luckiest person. कुछ काम किए बिना उसको सब कुछ मिलता है. हाँ सुमति जी, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जिसके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है? नहीं, अपने आप सब ढूंढो, आपके जो फ्रेंड्स में, आपके ऑफिस में किसका किसका ये डेट ऑफ बर्थ, सबका डेट ऑफ बर्थ आप चेक करो. ओके, 456. This is called the Lakshmi Purna. It is the Bhagya Purna, complete fortune luck. और ये है ना 456 इज द महाराजयोग. ये जो ग्रिड इसको है ना, ये जो 456 ये जो डायगोनल है, ये महाराजयोग. एक मेरी एक स्टूडेंट है, प्रिया करके नाम है उसका सिल्वर भी योग है. उसके ग्रिड में 258 है और 456 है. उसको कुछ भी किए बिना सब कुछ मिलता है. वो अभी कनाडा में है. और ये 456 ये मुश्किल योग है, मुश्किल, बहुत रेयर. दिस इज वेरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन टू फाइंड. बहुत, जिसका अगर आप ये 456 मिलेगा ना, वो आप वो उसको देखो, वो बहुत लकीएस्ट पर्सन आपको दिखेगा. उसको अगर उसका हिस्ट्री अगर आपको मालूम पड़ेगा ना, तो उसके लाइफ में सब कुछ ऐसा चल के आता है. द मीनिंग ऑफ दिस नंबर्स इन द लोशो ग्रिड इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, ये सबके लोशो ग्रिड में नंबर आपको नहीं मिलेगा. 456 वेरी रेयरली, वेरी डिफिकल्टली वो मिलेगा.
लेकिन हम ये नंबर का इफेक्ट हम अपने लोशो ग्रिड में ला सकते हैं। मैंने उसका कैसे, एक्यूपंक्चर पॉइंट से जो नंबर मिसिंग है उसका इफेक्ट हम ला सकते हैं। Loshu grid contain various type of planes such as the practical plane, diagonal plane, royal yoga, that is the what, that diagonal yoga, royal yoga, etc. So this grid helps in understanding a personality, destiny, and other aspect of the life. Some yogas are very rare, such as the Maharaj Yoga. It is the 4, 5, 6. You will find very rarely. So initial topic, there are the 8 planes of strength, 3 vertical, 3 horizontal, and 2 diagonal. This is called the 8 plane of strength. Why they are called arrows? Why they are called planes? When we have all the numbers, they form an arrow. Arrow means तीर. तीर तीर मालूम है ना, तीर. हाँ. For example, 492 together form one arrow. Okay, एक तीर फॉर्म हो गया 492. और 492 मैंने, ओके, खुद को अनम्यूट करो. फोर नाइन टू क्या होता है ये? व्हाट इज द 492? ओके, आलोकिया, आप, हाँ, व्हाट इज द 492? उमा जी, Yes, sir. 492. 492. Mental plane. या वेन, अगर 492 कंप्लीट होता है, ये मेंटल प्लेन फॉर्म होता है. दे टुगेदर फॉर्म द मेंटल प्लेन. नाउ 357, व्हाट इज मीनिंग? Emotional plane. हाँ, इमोशनल प्लेन. व्हेन 357 together form, okay, this is the emotional plane. Okay, now 816, what is meaning of 816? Practical plane. हाँ, practical plane. And 816 together form, there is the practical plane. And the importance of the arrow of strength, where 3 numbers are aligned in the column, row, or the diagonal, it is called an arrow of strength. These lines are very important because they symbolize power. So, types of arrows. Now, let's learn about the types of arrow. There are 3 types of arrow. You need to think about this and have the answer ready. If you don't remember, you can listen this video again when I will send you the recording. और ये मेंटल प्लेन क्या है? व्हाट इज द मेंटल प्लेन? मेंटल प्लेन एक ऐसा नंबर है जो आपको 3 नंबर के आधार पर बताना होता है. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आरोज ऑफ स्ट्रेन से जुड़ा हुआ है. अब आपको एक्सरसाइज करने का समय है. आपको
ये अपने लेक्चर को अच्छे से सुना होगा। अगर आपको किसी भी उत्तर में परेशानियां हो रही है तो ये वीडियो आप दोबारा सुने। कितना बजा? 11-12 बजने आया। अगली वीडियो, अगले सेशन में जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको सभी उत्तर समझ में आए और आगे की डिटेलिंग। तो इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारी डिटेलिंग कराऊंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके सभी सवालों के जवाब स्वयं समझ में आने लगेंगे। दोस्तों, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को आने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डिफिकल्टी है तो बिना झिझक इस सेशन को, इस वीडियो को आप दोबारा सुनो। तो इस सेशन में आर्ट प्लेन एरोज ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताया है। तो ये एरोज 3 नंबर से बनते हैं, जो किसी कॉलम, पंक्ति या जो विकर्ण में होते हैं। इसके अलावा 3 प्रकार के एरोज के बारे में भी चर्चा की गई है। अंत में सबको दोबारा सुनने और अभ्यास करने की मैं आपको सलाह देता हूँ। तो इसका नोट्स मिलेंगे? हाँ हाँ, ठीक है। मैं आज नोट्स में आपको देता हूँ। आज उसका पीडीएफ में आपको हाँ, वो फॉरवर्ड अच्छा करता है। हूँ। सर, हाँ, और एक डाउट था। मेरी नेफ्यू ट्विंस है, तो सेम डेट रहेगा बर्थ डेट, लेकिन वो लोग तो पर्सन डिफरेंट है ना, तो उनको कैसे देखेंगे? सेम डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो उसका उनका टाइमिंग भी अलग रहेगा ना। नहीं, लेकिन उनको तो पूछेंगे तो एक ही टाइम बोलते हैं। नहीं नहीं, टाइम नहीं नहीं, टाइम थोड़ा अलग अलग रहेगा तो। होगा। हाँ, टाइम अलग रहेगा। अगर अगर आवर्स में या सेकंड में या सेकेंड्स मिनट या में तो मिनट्स कुछ। में। हाँ हाँ, तो हाँ वो जो अगर ये जो टाइमिंग तो उनका डेस्टिनी अलग अलग हो सकता है। हाँ, वो तो पक्का होगा, क्योंकि हाँ पहले तो हाँ, तो कौन सा चाइल्ड फर्स्ट, ये क्योंकि पहला डेट आइडेंटिकल ऑफ भी बर्थ। नहीं है। दे आर हाँ नॉट हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस, दे आर डिफरेंट ओनली, बट फ्यू फ्यू मिनट्स डिफरेंस रहेगा। फ्यू मिनट सिजरिन था। डिफरेंस। हाँ हाँ हाँ, ट्विन ट्विन है ना, तो कुछ हाँ तो, हाँ कुछ तो एक साथ तो नहीं उनका हाँ जन्म रहेगा। कुछ तो मिनट्स में उनका डिफरेंस रहेगा ना। हाँ, अच्छा। हाँ, तो तो हाँ फिर वो अपन वो डिफरेंस। वाला कैसा अभी नहीं सीखेंगे ना, वो तो मोस्टली एडवांस में कुछ आएगा नहीं नहीं, वैसे। उसमें मैं उसका कुछ आपको अगले बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा मैं। हाँ, ठीक जरूर जरूर। मेरे स्टूडेंट के लिए तो मैं हमेशा ओपन रहूंगा मैं। ठीक है सर, थैंक ओके। हाँ, और कुछ डाउट है? उमा जी, नमस्ते। मुजफ्फर जी, जी हाँ, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। हाँ हाँ। ये अभी अभी आपने जो बोला ना आखिरी में, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। आपने बताया ना कि जो हम्म। मिसिंग नंबर्स है ना, हम लोग बाय यूजिंग एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर उसको हम लोग अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही नई बात मैंने आज सुना सर आपके जबान से अच्छा, कि आप नंबर्स है कोई ना। कोई भी प्लानिटरी पोजीशन का जो या करेक्शन है, हम एक्यूपंक्चर से, एक्यूप्रेशर से, हम या मैग्नेट से, हम सीड से, हम कलर थेरेपी हाँ से हाँ हम उसका चेंज कर सकते हैं। हाँ 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 जी हाँ, सर। ये सब रियली डीएनए में रियली। ही ये होते हैं इसका। हाँ, हाँ हाँ तो पहले क्या, मतलब पहले जमाने में लोग ने हमारे जो एंसेस्टर ने हमें बताया है, जो तुमको मिला है वही से जी आपको खुश रहना पड़ेगा। हाँ, जो जी जी तुम्हारे सर। भाग्य में है वही तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी लेकिन जी जी। अभी क्या है, मतलब ये जो ये जो अभी डीएनए भी चेंज होता है, और डेट ऑफ हाँ बर्थ, हाँ डेट ऑफ बर्थ में जो भाग्य में है वो भाग्य हम
हाँ चेंज कर सकते हैं। ऐसे अभी साइंस जी जी बहुत सर, आगे बढ़ गए है। एपिजेनेटिक है, बराबर सर। जो डीएनए लेवल या, पे काम करता है। हाँ, ये हम हाँ एक्यूपंक्चर से भी अपना करेक्शन कर सकते हैं। राइट राइट राइट। नहीं, आप जो बता रहे थे ना सर, मैं ग्रैंडसन, उसके अंदर 4 5 6 भी है, 8 5 2 है सर, बाय फॉर्चुनेटली एक, ये हाँ दोनों हाँ, पे एरोज हैं सर उसके। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो आप जो बोला थे ना कि इट इज रेयर थिंग, मैं देखा इधर, अरे यार इसके अंदर दोनों भी एरोज आ रहे हैं, तो सुन के अच्छा लगा सर वो। अच्छा अच्छा। जी या जी ये जी। आगे देखते रहिए, आपको अच्छी यस तरह यस, समझ में आ जाएगा, आप अच्छी मालूम तरह से। पड़ेगा। यस 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 सर, बहुत हम्म। बहुत बढ़िया सर। जी हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी ओके मच। सर। ओके, और किसी का कुछ क्यूरीज है क्या? हेलो, किसी का क्यूरीज है क्या? आप खुद को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। मनोज गुप्ता जी, सविता जी, यू यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी सर, गुप्ता एक जी। चीज जो लोसू ग्रिड चार्ट बनी हुई है आपकी, जो चार्ट लोसू ग्रिड पे हम काम कर रहे हैं, तो जो डेट ऑफ बर्थ के साथ जो खाना जो ब्लैंक होती है, उसमें क्या क्लिक करना होता है? जो जिसमें ब्लैंक ब्लैंक ग्रिड रहते हैं। हाँ जी। हाँ, तो ब्लैंक ग्रिड है ना, हम अभी ये तो हम अभी बेसिक लेवल पे ही हम अभी बात कर रहे हैं। जब हम्म, ब्लैंक, जब जब कोई जो प्लेनेट एब्सेंट रहता है, तो हम्म, उसका जो प्रभाव है, हम एक्यूपंक्चर से हम उसका प्रभाव ला सकते हैं। हाँ ओके ओके। हाँ, तो ये कोर्स में ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो वैसे हम आपको इसका जो प्रोसीजर है, ये ट्रीटमेंट क्या करना है। अभी अभी सविता गायकवाड़ जी हमारे साथ है, तो उन्होंने भी एक एक पेशेंट है, उनका कुछ डाइवोर्स तक बात हो गया था। सविता जी, आप अनम्यूट कीजिए और ये बताइए स्टोरी। तो उनको उन्होंने मैंने उनको गाइड किया और उनको ट्रीटमेंट दे दिया उन्होंने। तो उनका जो रिलेशन वो बहुत अच्छा हो गया, और वो जो डाइवोर्स का वो नौबत नहीं आया। सविता जी बोलिए। यस यस सर, थैंक यू सर। एक्चुअली मेरे पास एक केस थी, हस्बैंड वाइफ थे उनका, मतलब उनमें बनती ही नहीं थी बिल्कुल भी, अपोजिट नेचर था उनका। और मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ लेके सर से थोड़ा गाइडेंस लेके उनको ट्रीटमेंट किया विद द एक्यूपंक्चर। तो रिजल्ट इतना अच्छा आया कि उनके दोनों के बनने लगी और डिवोर्स तक गया था उनका केस। तो अभी वो लोग साथ में अच्छे से रह रहे हैं। मतलब पिछले 4 महीने से वो लोग दे आर स्टेइंग टुगेदर और चल रहा है, मतलब सब कुछ वो वैनिश हो गया उनके जो बीच में था। दैट इज गुड। मतलब ऐसे अच्छे रिजल्ट है। इनफैक्ट मैंने मेरे पे भी ये सर से लेके गाइडेंस लेके किया था और अच्छे रिजल्ट है इसके। तो ओके, थैंक यू सो मच, आगे हम हाँ लोग तो पढ़ेंगे। इसका, हाँ इसका किसी इसका और भी अच्छा रिजल्ट है। आप ये रिलेशन लेवल पे, अपने हेल्थ लेवल पे, हेल्थ प्रॉस्पेरिटी, आपका मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, अगर आपके पास कुछ पैसा अटका हुआ है, तो हाँ, वो पैसा कैसा आपके पास रिटर्न आएगा? कोई अगर आपकी प्रॉस्पेरिटी अभी नहीं है, अभी आपकी हालात ऐसी ऐसे तैसे है, तो उसको आपके जो ये मनी मनी प्रॉस्पेरिटी आप कैसे आपके लाइफ में ला सकते हैं? तो ये एक्यूपंक्चर से ये पॉसिबल होता है। तो ये एक्यूपंक्चर ये गॉड थेरेपी है, गॉड ने हमें दिया है। तो ये हम प्लेनेटरी पोजीशन इससे हम करेक्ट कर सकते हैं। मनोज जी, मनोज जी, आप कुछ ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं क्या? आप एस्ट्रोलॉजिस्ट है? हाँ मनोज जी। हम ऑलरेडी आयुर्वेदा आयुर्वेदा
आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आप एक्यूपंक्चर, ये जो लोशो ग्रिड भी सीखी है, आप हमारे ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। ये कोर्स है, ये ओके सर। अभी ये आज का चौथा सेशन है, ये 5 सेशन फ्री है। उसके बाद ये जो एनरोल स्टूडेंट को ये अलाउ है। अगर आपको ओके सर। हाँ, अगर आपको आगे सीखना है, आप एनरोल कर सकते हैं। ओके ओके हाँ हाँ हाँ। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। और किसका क्यूरीज है? ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ Thank you, एंडिंग sir. द, हाँ, Thank एंडिंग you, द sir. सेशन। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, welcome, welcome.